Pradesh over the controversial fish feast in Ayodhya. The controversy began after visuals surfaced showing fish being prepared at a banquet hall in Ayodhya during the sacred month of Sawan. The event had been organized by Congress leader Ram Nihal Nishad after he joined the party, and UP Congress chief Ajay Rai, who was one among the others who attended that event. UP CM Yogi Adityanath has launched a blistering attack, accusing the Congress of religious hypocrisy. Yogi Adityanath says Ajay Rai went to offer prayers at Hanuman Gadi and then stepped out for a fish feast. He also added that even a chameleon would be ashamed of such double standards. कल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष का आपने आचरण देखा होगा। हनुमानगढ़ी में दर्शन करने जाते हैं और बाहर जाकर के मछली का दावत उड़ाते हैं, ये राम राम चिल्लाते हैं। बेशर्मी की भी एक सीमा होती है। किसने कहा था फिर मंदिर जाने के लिए? अरे जो खाना था बाहर खा लेते, अयोध्या के बाहर खा लेते, लेकिन उनके कार्यालय में ये है इनका दोहरा आचरण। गिरगिट भी शर्मा जाता है इन लोगों के सामने, तो वो भी शर्मा जाता होगा कि मनुष्य के रूप में हमारी कौन सी ऐसी प्रजाति हो गई है कि जो वहां मंदिर में राम राम चिल्ला रहे हैं, बजरंगबली के सामने दंडवत होने का ढोंग कर रहे हैं, लेकिन बाहर जाकर के मछली की दावत उड़ा रहे हैं। And now Congress Party's Uttar Pradesh unit chief Ajay Rai has hit back at the state's ruling BJP amid the controversy over serving non-vegetarian food at a feast in Ayodhya that he attended. He has challenged Chief Minister Yogi Adityanath to provide evidence that he consumed fish there. He said he would resign as Congress's UP unit chief if the BJP were to prove the allegation. मछली बांटने का कोई प्रमाण है तो योगी जी कह रहे हैं तो मैं तैयार हूं इस्तीफा देने के लिए। मैं तो पहले ही कहा था इस्तीफा दे दूंगा। जिस तरीके से ये झूठी बात बोल रहे हैं, गिरुआ पहनकर झूठ बोल रहे हैं और कह रहे हैं कि जो इनको बाहर खाना चाहिए था, अरे हम खाते ही नहीं है। इनकी तरह मेरा, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष की तरह नहीं चरित्र है, दोगला चरित्र की। खा रहे हैं, कह रहे हैं कटहल खा रहे हैं, नॉनवेज खा रहे हैं साउथ में बैठ के। साउथ में किसी सब्जी में कटहल नहीं खाया जाता है। मैंने इतना साउथ में खाया है खाना अभी तक, कहीं भी कटहल नहीं, कटहल फल के रूप में खाते हैं वहां। Let's go across to Adib, who is joining us in the broadcast with more details. Consumption of fish, allegation coming in from the Chief Minister, and Mr. Ajay Rai hitting back has led to a political face-off. Ajay Rai has now challenged the Chief Minister. He is asking BJP to prove the allegations of him consuming fish at that event. I will certainly, Swati, see the entire BJP, whether it be the Pankaj Chaudhary, the state president of the BJP, or Chief Minister Yogi Adityanath. They attacked the Congress party over the fish feast event that was organized in Ayodhya shortly after Ajay Rai visited the Hanuman Gadi temple. And now Ajay Rai has hit back at the Chief Minister Yogi Adityanath and the BJP. Now Ajay Rai is saying that I'm purely vegetarian, and if BJP has any kind of proof, in fact the Chief Minister has anything to prove, he should first prove that I consume the fish, but I am entirely vegetarian and I had no intention of consuming fish or whatsoever. In fact, the local organizers of the Congress party who organized this particular event, they went on to say that this has been their tradition and they have been doing it in any event that is happening of the Nishad community. But the BJP has hit back at the Congress party, saying that they have insulted the belief of crores of Sanatanis who believe in Sanatan Dharma, and this is an insult to Sanatan that has been done by the Congress party and the state president Ajay Rai. So massive war of words there between the BJP and the Congress. Adib, thank you for getting us the details. Congress and the Samajwadi Party are turning the attack back on the BJP, accusing it of using Ayodhya fish controversy to divert attention from what they call the real issues. Congress's Pawan Kheda has brought in the Nishad community angle, asking whether the BJP now wants to dictate what a community traditionally associated with fish can or cannot eat. Samajwadi Party has gone a step further, accusing the BJP of selective outrage. Are they saying that the Nishad community should not eat fish because Mohan Bhagwat doesn't like it? This is the problem. They interfere in everybody's culture. Now they are opposed to Nishads. Do you know the role of Nishads in Ramayana, in the life of Lord Rama? So they are trying to create a fake outrage so that people don't talk about the Chanda Chori in Ayodhya.
दरअसल बीजेपी का ये बहुत पुराना फार्मूला है। जब वो बुनियादी मुद्दों पे घिरते हैं, जैसे आजकल स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार और चढ़ावा चोरी पे बुरी तरह से घिरे हुए हैं, तो इसलिए नैरेटिव्स बनाने के लिए, प्रोपेगेंडा के लिए कांग्रेस पार्टी के उस आयोजन को निशाना बना रहे हैं। अभी सावन में ही उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन मटन और चिकन खाते हुए वायरल हुए थे, तब सनातन धर्म का अपमान नहीं था। I don't think Bharatiya Janata Party has any face to talk about dynasty. Ask Mr. Amit Shah what is the criteria of Jai Shah, the so-called Yuvraj of BJP, who's heading the BCCI. In Delhi, Bansi Swaraj, what is the qualification? Pravesh Sahib Singh Verma, what is the qualification? In BJP, there's an entire list. Do you think BJP today can speak about dynasty politics? Rajnath Singh, his son is an MLA. You look at any leader in Bharatiya Janata Party, look at their ministers, all are dynasty. Chirag Paswan, what is he? So, BJP can't talk. BJP has a habit of deviating from the main topic. The main topic today stands very clear. Chhatro ki gunj has rattled Bharatiya Janata Party. NEET paper leak has shaken the entire system. The youth of the country is against BJP. And yes, we should not forget Ayodhya, Ram Mandir, Chanda Chadawa Chori. Meanwhile, the attack on Congress is not just coming from Yogi Adityanath alone. Two of his cabinet colleagues are also reacting. UP Minister Sanjay Nishad says Congress cannot invoke Bajrang Bali on one hand and be associated with a fish feast on the other, accusing the party of ignoring Nishad community's real problems for decades. Om Prakash Rajbhar has also joined the offensive, accusing Congress of displaying double standards on faith, presenting itself as a devotee of Lord Ram and reciting Hanuman Chalisa while being associated with a fish feast in Ayodhya during Sawan. कि सावन के महीने में चोरी से खाते ठीक चलता, लेकिन सार्वजनिक प्लेस पर, वो भी अयोध्या में हनुमानगढ़ी में मछली का भोज करा रहे हैं, तो ये तो उन्हीं को पसंद आता होगा। इसके लिए कांग्रेस को अब क्या कहा जाए। एक तरफ तो भगवान राम के भक्त बनते हैं, हनुमान जी का चालीसा पढ़ते हैं, दूसरी तरफ मछली भोज करते हैं। ये कल्चर है कांग्रेस का। कांग्रेस चालाक पार्टी है 70 साल से। ये नहीं चाहती है कि निषादों की गरीबी पर चर्चा हो। आज के दिन में जब वो मंदिर भी जाएंगे, अब जो है बजरंगबली के पास भी जाएंगे और इधर जो है मछली भी खाएंगे, तो दोनों में से एक ही कराना कांग्रेस है। जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने वो भी अयोध्या जैसे पवित्र स्थान पर और सावन के पर्व में अगर मछली और चावल की पार्टी रखी हो तो दुर्भाग्य है ऐसी पार्टी का। लेकिन जिस प्रकार से माननीय संजय निषाद जी ने कहा है कि लहसुन प्याज अगर मछली में नहीं पड़े तो वो वेजिटेरियन होता है, तो हमको लगता है कि अभी तक तो मैं ऐसा किसी किताब में पढ़ा नहीं हूँ कि मछली जो है वेजिटेरियन में आती है। All right, moving on, we have some breaking inputs coming in on the broadcast.